टेस्ट बेंच। सो टेस्ट बेंच होता क्या है और कैसे लिखते हैं, so that part here we are going to check it. Okay, so let's start with the test bench. Okay, so here you may find what we have designed. आपने यहाँ पे क्या डिजाइन किया है, हाफ एडर। आपने क्या डिजाइन है, हाफ एडर। अभी ये हाफ एडर को आपको टेस्ट करना है। ओके, नाउ लेट मी नो, डू यू नो एनी आईसी? आपको कोई आईसी का नाम पता है क्या? कोई भी आईसी, 741, 7400, कोई भी आईसी, एनीवन? यू मे मैसेज हियर। 741 करेक्ट। 741 आईसी किसकी है? कौन सी आईसी है 741? 555 टाइमर, करेक्ट। 741 आईसी कौन सी है? ऑपैम, वेरी करेक्ट। सो लेट अज्यूम कि आपके पास में 741 आईसी है ना, और ये 741 आईसी को टेस्ट करना है मुझे। सो लेट अज्यूम इट हैज अ पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। Pin number 2 and 3 are my inputs. Pin number 6 is my output. Pin number 8 VDD, pin number or VCC. Pin number 4 is ground. 1 is unconnected. 7 and 5 is for your biasing. Okay. So ये IC को मुझे टेस्ट करना है 741 को। तो कहाँ पे टेस्ट करोगे आप? घर पे। 741 को IC को मुझे टेस्ट करना है, तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? मैं 741 IC को टेस्ट करना है, so where I have to go? Can anyone tell me? या फिर आपकी कोई भी आईसी ले लो जिसको आपको टेस्ट करना है, उसका इनपुट आउटपुट चेक करना है, उसकी फंक्शनलिटी चेक करना है, तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा? करेक्ट कावेरी, यू हैव टू गो इन द लैब। इसका मतलब क्या है? आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पे आपको टेस्ट करना है अपने आईसी को। आर यू गेटिंग इट? वेरी सिंपल। सो व्हाट हियर इन द सेम वन, आपको क्या टेस्ट करना है वेरीलॉग में? आई वॉन्ट टू टेस्ट माई हाफ एडर। मुझे क्या करना है? एक हाफ एडर टेस्ट करना है। इसका मतलब मुझे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और वो एनवायरनमेंट को मैं बोलूंगा टेस्ट बेंच। इसको मैं क्या बोलूंगा? टेस्ट बेंच। सो टेस्ट बेंच इज एन एनवायरनमेंट वेयर वी टेस्ट अवर डिजाइन। टेस्ट बेंच क्या है आपका? एक एनवायरनमेंट है जहां पे आप जो आपने डिजाइन बनाया है उसको आप टेस्ट करने वाले हैं। आर यू गेटिंग इट? लैब में आप आईसी चेक करते हो ना, इन द सेम वे फॉर दिस वेरीलॉग डिजाइन वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर विच वी कैन टेस्ट अवर डिजाइन, जो कि आपको आपका डिजाइन टेस्ट करके दे। क्लियर? ओके, सो व्हाट टू डू? अभी आपने यहां पे क्या किया? आपके लैब में ब्रेडबोर्ड रखा है, ब्रेडबोर्ड के ऊपर आपने आईसी रखी है। सिमिलरली ये एनवायरनमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? आपका डिजाइन लेके आना पड़ेगा। एंड दैट डिजाइन नेम इज, वो मेरे डिजाइन का नाम क्या था? हाफ एडर। ओके, जस्ट कंपेयर बोथ द थिंग्स। दोनों को आपको कंपेयर करना है। ये है मेरी लैब जहां पे मुझे टेस्ट करना है आईसी 741, और ये है मेरा टेस्ट बेंच जहां पे मेरे को टेस्ट करना है मेरा डिजाइन। और मेरे डिजाइन का नाम क्या था? हाफ एडर। अच्छा, हाफ एडर को कौन कौन से इनपुट्स थे? ए, बी, सम, सी आउट। नाउ दिस इज नोन एज अ मॉड्यूल। ओके, टेस्ट बेंच इज ऑल्सो मॉड्यूल. So we use half adder module in test bench. So that is known as your modules. जब कोई भी एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के अंदर यूज अगर हो रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। क्लियर? नाउ लेट गो बैक टू योर लैब। अभी आपने आईसी तो रख दी है ना,
सो यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा पावर, वीसीसी, देयर इज अ ग्राउंड, क्लियर। ना आप मुझे बताओ कि पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को आप क्या लगाने वाले हैं, इनपुट देना पड़ेगा। सो इनपुट आप कहां से देते हो, आप इनपुट कहां से देते हो, कैन एनीवन टेल मी। हाँ, इनपुट पिन नंबर 2 और 3 को आपको इनपुट देना है, जो कि वेव फॉर्म या फिर सिग्नल बोलेंगे। तो सिग्नल आप कौन से डिवाइस से सिग्नल देने वाले हो, यू आर प्रोवाइडिंग a signal from which device in lab, that is known as फंक्शन जनरेटर। उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन जनरेटर। तो फंक्शन जनरेटर कहां पे अवेलेबल है, डीएसओ पे आप आउटपुट चेक करते हो। हाँ, तो ये फंक्शन जनरेटर कहां पे अवेलेबल है, इन द लैब, समझ में आया ना। और आप आउटपुट कहां पे चेक करते हो, सीआरओ या फिर डीएसओ पे, करेक्ट। So that means this DSO, this function generators are available in the lab. In the same way, टेस्ट बेंच में आपको इनपुट देना पड़ेगा, जो आपका डिजाइन है उसको, ए और बी को, और आउटपुट चेक करना पड़ेगा, सम और सी आउट को। सो आपको यहाँ पे ए और बी को इनपुट देना पड़ेगा, और ये इनपुट जो अवेलेबल रहेगा वो टेस्ट बेंच के एनवायरमेंट में ही अवेलेबल रहेगा, टेस्ट बेंच के अंदर अवेलेबल रहेगा, बाहर नहीं। ओके, टेस्ट बेंच के बाहर नहीं, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेस्ट बेंच है, इसको जैसे आपने हाफ एडर को, जैसे आपने यहाँ पे हाफ एडर को यहाँ पे पोर्ट्स दिए, इनपुट पोर्ट्स ए एंड बी, है ना, और आपने आउटपुट पोर्ट लिखे सम एंड सी आउट। सो उस प्रकार से ये जो टेस्ट बेंच का ब्लॉक दिख रहा है, इसको आप एक्सटर्नल इनपुट, आप इनपुट और आउटपुट दिख रहे हैं क्या आपको, टेस्ट बेंच के जो ब्लॉक डायग्राम ने ड्रॉ की, एक ब्लॉक ड्रॉ किया, वो ब्लॉक में आपको कहीं पे इनपुट आउटपुट दिख रहे हैं क्या, ये जो है एक ब्लॉक, ब्लैक बॉक्स यू कैन से। सो इसको आपको इनपुट आउटपुट दिख रहे हैं क्या, यस, एनीवन टेल मी। कोई एक्सटर्नल पोर्ट दिख रहा है क्या टेस्ट बेंच के जो ब्लॉक ड्रॉ किया उसको, नो। सो इट मींस टेस्ट बेंच इज अ प्रोग्राम, is a Verilog program you can say, or it's a program, or you can also say that Testbench is a module. Testbench is a module without port. Testbench is a module without port. Is it also known as blueprint? No, it's not a blueprint. Here we are going to test our design. So it's a test bench, not a blueprint. Okay. Blueprint is something different, where we are having a design. Okay. So test bench is a module without port. Verilog design program और Verilog test bench program में क्या difference है? टेस्ट बेंच प्रोग्राम में आपको मॉड्यूल में पोर्ट नहीं दिखाई देंगे, और डिजाइन में आपको क्या मिलेगा, जैसे ये डिजाइन है हाफ एडर का, सो डेफिनेटली इट विल हैव द पोर्ट लिस्ट और पोर्ट्स। आर यू गेटिंग इट, समझ में आया क्या दोनों के डिफरेंस। डिजाइन का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें आपके पोर्ट्स रहेंगे, और टेस्ट बेंच में पोर्ट्स रहेंगे क्या, नहीं, करेक्ट। Okay, so design generates your hardware, where test bench is used for your simulation to test your design. test bench आप क्यों लिख रहे हैं, आपका जो आपने डिजाइन बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए, क्लियर। ओके, सो जैसे लैब में आपने 741 आईसी रखी, तो ऐसी आपको टेस्ट बेंच में आपका जो डिजाइन है उसको रखना पड़ेगा, और आपके डिजाइन का नाम क्या है, हाफ_एडर, हाफ_एडर। और इसके जो पोर्ट्स रहेंगे हाफ एडर को, उसको हम इनसाइड लिखते हैं, बाहर नहीं लिखते हैं। जब कोई भी डिजाइन दूसरे डिजाइन में यूज कर रहे होंगे,
तब उसके जो पोर्ट लिस्ट है वो इनसाइड ऑफ द ब्लॉक लिखते हैं, उसके बाहर नहीं। यहां पे चेक करो, जब आपने प्रीवियसली इसको डिजाइन किया तब आपने इसको पोर्ट्स कहां पे लिखे, या फिर पोर्ट्स नेम आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक। लेकिन वही ब्लॉक, वही डिजाइन जब दूसरे डिजाइन में या फिर दूसरे मॉडल में यूज होने वाला है, तो उसके जो पोर्ट रहेंगे वो हम लिखेंगे इनसाइड, दैट इज नोन एज फॉर्मल पोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पोर्ट। ओके, तो अभी यहां पे चेक करो लैब में IC 741, तो पिन नंबर 2 और 3 को आप इनपुट देने वाले हैं, और कहां से देने वाले, फंक्शन जनरेटर। तो फंक्शन जनरेटर कहां पे अवेलेबल है, लैब के अंदर। सिमिलरली आप आउटपुट चेक करने वाले हैं DSO पे, और DSO कहां पे अवेलेबल, लैब के अंदर। सिमिलरली ये जो डिजाइन है जिसको आपको टेस्ट करना है, इसको आपको इनपुट देना पड़ेगा। सो दैट इनपुट शुड बी, वो इनपुट कहां पे होना चाहिए, टेस्ट बेंच के अंदर, नॉट आउटसाइड, इट शुड बी इनसाइड। ओके, अभी आप मुझे चेक करो, लेट अज्यूम दैट वी आर कनेक्टिंग हियर द फंक्शन जनरेटर विद पिन नंबर 2 एंड वी आर प्रोवाइडिंग दैट सर्टेन सिग्नल। सो आप IC 741 को कैसे टेस्ट करते हो, सबसे पहले आप सिग्नल दोगे, लेट अज्यूम दैट 1 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज। लेट अज्यूम दैट आपने एक सिग्नल दे दिया 1 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज। सो इसके बाद में आप वेट करोगे आउटपुट का, ओके, वेदर आई एम गेटिंग दैट अ प्रॉपर आउटपुट और नॉट। ओके, 1 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज। इसके बाद में आप क्या करते हो, वी आर कीपिंग द एम्पलीट्यूड सेम एंड वी जस्ट चेंज द फ्रीक्वेंसी। 1 किलोहर्ट्ज के बाद में आप फ्रीक्वेंसी कितने करते हो, 2 किलोहर्ट्ज। समझ में आया ना, दैट मीन्स वी आर चेंजिंग अवर इनपुट्स, वी आर चेंजिंग अवर इनपुट्स, 1 volt 2 kilohertz, then 3 kilohertz, 4 kilohertz, 5 kilohertz, and so on. So after few second or few time we change our inputs. So similarly टेस्ट बेंच में भी आपको जो इनपुट रहेगा उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशंस, एंड दैट्स व्हाई we use the data type inside in test bench for an input, and that is known as register data type. Why register data type? There are the two data types. One is known as your register data type, second is known as your net data type. ये मैं आपको बताऊंगा बाद में. So कौन सा डेटा टाइप यूज करना है आपको, रजिस्टर डेटा टाइप। और ये जो रहेगा इनपुट, या फिर इसको आप वेरिएबल बोल सकते हैं, इसका नाम देंगे हम ए। ओके, सिमिलरली फॉर सेकेंड इनपुट वी आर यूजिंग दैट सेकेंड रजिस्टर, और वो वेरिएबल का हम नाम देंगे रजिस्टर बी। क्लियर? ओके, सो फॉर योर लैब वी आर यूजिंग DSO फॉर योर आउटपुट। सो ऑन DSO you can just monitor your output. यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते आउटपुट को, बिकॉज आउटपुट इज जनरेटेड, आपका आउटपुट है वो जनरेट होता है। So similarly here in test bench also we just observe the output, we are not changing its value. That's why your output should be wire data type. Your output should be wire data type because we just monitor, we are not changing their value. So wire, एक वायर हम लेंगे उसका नाम देंगे सम, एक सेकेंड वायर लेंगे और उसका नाम हम देंगे सी आउट। Are you getting this? So these are the devices, or we can see in the lab these are the devices are available, that is a function generator, then DSO और आपकी IC, then power supply. इसके बाद में आप क्या करते हो, we are just connecting pin number 2 with function generator, pin number 3 is function generator or whatever you can say ground, then pin number 6 is connected with your DSO. Okay, सिमिलरली यहाँ पे आपका जो ए है हाफ एडर का, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मल पोर्ट, वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एक्चुअल पोर्ट के साथ में। सो दिस इज नोन एज, जो कनेक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट पोर्ट्स या फिर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, इसको हम बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट मैपिंग। पोर्ट मैपिंग का मतलब सिंपली कनेक्शंस बिटवीन हाफ एडर पोर्ट्स एंड टेस्ट बेंच पोर्ट्स। Clear? So similarly between B and B, then sum and sum, and wire and wire. Very simple. So what is your test bench? Test bench is a model without port. So test bench में सबसे पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, जो डिजाइन आपको टेस्ट करना है उसको आपको रखना पड़ेगा,
सो दैट इज ऑफ योर हाफ एडर। क्लियर? उसके बाद में आपको इनपुट्स प्रोवाइड करना है हाफ एडर को, तो उसके लिए आपको डेटा डिफाइन करना पड़ेगा एंड दैट डेटा टाइप शुड बी ऑफ योर रजिस्टर फॉर योर इनपुट। और आउटपुट के लिए आप कौन सा डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं? वायर। उसके बाद में आपको यहाँ पे कनेक्शंस करना पड़ेगा, ए विथ ए, बी विथ बी, सम विथ सम एंड सी आउट विथ सी आउट। ओके, and after that you are just providing the value of a, value of b, and we are waiting for outputs. So let's check how to write the program. ये connection समझ में आया? सबसे पहले what is Testbench, then we are going to write the program. Testbench समझ में आया आपको? Any doubt? Yes, thank you Payal. Any other students? Have you understood? Clear, Karan? Very good. Kanchan, good. Any doubt you may have? Tanya, good. Sakshi, clear. Falguni, clear. Okay. So shall we proceed for Verilog program? How to write program? So let's check how to write the program for this Testbench. That's a very, very important. If you want to go for your verification jobs, so this is the first step towards it. We want to verify our design through Testbench program. And how Testbench is a program or is a model without port. जैसे आप लैब में कोई आईसी अगर आप टेस्ट कर रहे होंगे, so आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? लैब में। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे डिजाइन आपको टेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और वो एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे टेस्टबेंच। वो एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे? टेस्टबेंच। आर यू गेटिंग इट? सो ये जो टेस्टबेंच आपको दिख रहा है या फिर ब्लॉक दिख रहा है, इसके बाहर आपको कुछ पोर्ट दिख रहे हैं क्या? नहीं। सो सबसे पहले क्या है? टेस्टबेंच इज अ प्रोग्राम विदाउट पोर्ट, सो इट इज विदाउट पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट कंप्लीट किया उसके बाद में सेमीकोलन, तो यहाँ पे कुछ भी पोर्ट लिस्ट नहीं है, देयर इज नो पोर्ट लिस्ट। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ जब आप लैब में अगर जा रहे होंगे तो लैब में आपको क्या रहती है? सब फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। फंक्शन जनरेटर है, डीएसओ है, ब्रेड बोर्ड है एंड सो ऑन। सो जैसे आपको अगर आईसी टेस्ट करना है 741, तो आप कहाँ पे जाओगे? लैब में। सो यहाँ पे आपको क्या टेस्ट करना है? यहाँ पे आपको टेस्ट करना है हाफ एडर। यहाँ पे आपको क्या टेस्ट करना है? हाफ एडर। तो आपको हाफ एडर को कहां पे रखना पड़ेगा? वो एनवायरनमेंट में जहां पे आपको टेस्ट करना है, जस्ट लाइक 741। तो 741 को कुछ तो भी पिन से, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 को आप इनपुट देंगे, पिन नंबर 6 को आउटपुट लेंगे। सो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को क्या लगाना पड़ेगा? पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को आपको इनपुट्स देना पड़ेगा, और इनपुट्स आप कहां पे दोगे? लैब में, फ्रॉम फंक्शन जनरेटर। बराबर है? सो सिमिलरली यहाँ पे हाफ एडर के जो इनपुट्स है ए और बी, तो इनको आपको इनपुट देना पड़ेगा। अभी तो टेस्टबेंच में कहीं भी इनपुट है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे इनपुट शो करना पड़ेगा या फिर जनरेट करना पड़ेगा, या फिर यू हैव टू रिप्रेजेंट हियर इनपुट्स। सो जो इनपुट्स है वो इनपुट की वैल्यू चेंज होना चाहिए। जैसे फंक्शन जनरेटर की इनपुट्स आप चेंज करते हो इनिशियली, अगर आपने इनपुट दे दिया 1 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सो आफ्टर सर्टेन टाइम्स यू जस्ट चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आप फंक्शन जनरेटर का जो इनपुट है इसको चेंज कर सकते हैं। सो सिमिलरली आपके पास में ऐसा डेटा टाइप चाहिए जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन। सो दैट्स व्हाई हियर वी यूज डेटा टाइप इज रजिस्टर। So we are having 2 inputs for your half adder. That's why we created there 2 data types, and that is of your register A and register B. Okay. आउटपुट जो है IC 741 का वो है पिन नंबर 6, और जो कि कनेक्ट रहेंगे आपका CRO या फिर DSO को। अब CRO और DSO ये डिवाइस आप किस लिए यूज कर रहे हैं? मॉनिटरिंग के लिए, कि सच में आपका आउटपुट एम्पलीफाई आउटपुट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। क्लियर? उसके लिए आप यूज कर रहे हैं। सो सिमिलरली here also we are having the 2 outputs, that is sum and cout, and that is going for your monitoring. तो यहां पे आप चेंज नहीं कर रहे, यहां पे आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं करने वाले हैं,
इसलिए ये डेटा टाइप आपको यूज करना है वायर डेटा टाइप. ओके, एनी डाउट? इज दैट मंदार? इज इट क्लियर? मंदार? So, any doubt here? Is that clear? Okay. So we are going to write the program for the same. Okay. So how we can write? Let's check it. Okay. So we start with module. Okay. Then module name. So what the module name of my this test bench is? This of your TV underscore hop underscore add, and this there is a no port. ये जो आप ब्लॉक दिख रहे हैं, इसके बाहर आपको कुछ पोर्ट दिख रहे हैं क्या? Nothing. Clear? So this of your module without port. Now what inside it? इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक रजिस्टर है A, एक दूसरा रजिस्टर है B. So we are writing keep as it is. We are having the data type is register and what their name is A, B. जैसे आपने इनपुट और आउटपुट डिफाइन किए थे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है? रजिस्टर डेटा टाइप. What data type? Register data type. And what the variable we are having? A and B. Is that clear? Okay. What again you can think or what again you can see inside in this test bench? और कौन सा डेटा टाइप आपको दिख रहा है? वायर. So we are having that wire data types and what their port name is or what their variable name is? Sum and Cout. Okay. So we are creating an environment where we are having that inputs are register A and B and outputs are wire, that is sum and Cout. इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना डिजाइन भी रखना है. जो आपने डिजाइन बनाया था उसको आपको प्लेस करना है. जस्ट लाइक IC 741 को आपको टेस्ट करना है तो आपको लैब में लाना पड़ेगा. सो सिमिलरली यहाँ पे भी ये डिजाइन को लाना पड़ेगा. सो ये डिजाइन को हम कैसे कॉल करते हैं? तो सबसे पहले उसका जो नाम है मॉडल का, सो ये मॉडल का नाम क्या था? हॉप अंडरस्कोर एडर. सो कीप दैट नेम इज सेम. अभी आप मुझे बताओ कि जो IC है 741, ये आपके उसमें एक से ज्यादा भी हो सकती है ना? सेम IC 741, इट मे बी मोर देन वन एंड यू मे यूज दैट मल्टीपल टाइम्स. सो सिमिलरली ये जो हाफ एडर है ये भी आपके उसमें मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज योर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू यूज. सो ये जो रहेगा हाफ एडर, इसको हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो इसका इंस्टेंस नेम लिखेंगे. सो इट मे बी UUT, यूनिट अंडर टेस्ट, दैट इज नोन एज योर इंस्टेंस नेम. ओके, इसके बाद में आपको करना है कनेक्शंस. तो कनेक्शन कैसे करना है? जो फॉर्मल पोर्ट है ये किसके साथ में कनेक्ट है? एक्चुअल पोर्ट के साथ में. सो A connect with A, B connect with B, sum connect with sum, and Cout connect with Cout. So how we can write? So this is my actual port, that is a dot A in bracket formal port. So my formal port connect with actual port. Clear? So how to write it? Simply dot A in bracket A, comma, dot B in bracket B. Then what my third connection is? मेरा तीसरा कनेक्शन कौन सा है? डॉट सम. सम के साथ में कनेक्ट करना है. सो डॉट सम इन ब्रैकेट सम. देन चौथा कनेक्शन कौन सा है मेरा?
cout. So that is of your dot cout in bracket cout. Is it clear? Is it clear? जो कुछ भी आपको ब्लॉक में दिख रहा है उसी को आपको लिखना है. So सबसे पहले मॉड्यूल का नाम क्या है? मेरे मॉड्यूल का नाम क्या है? What is my model name is Testbench TB_half adder. Okay, without port. फिर ब्लॉक के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ब्लॉक के अंदर आपको दिख रहा है रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, वायर, सम एंड सी आउट. उसके बाद में आपको अपना डिजाइन भी रखना है. आपके डिजाइन का नाम क्या है? half_adder एंड दैट इज नोन एज योर इंस्टेंस नेम UUT. और इसके बाद में पोर्ट के कनेक्शंस. सो ए किसके साथ में कनेक्ट है? रजिस्टर ए के साथ में. बी किसके साथ में कनेक्ट है? रजिस्टर बी के साथ में. सम किसके साथ में कनेक्ट है? वायर सम के साथ में. और सी आउट किसके साथ में कनेक्ट है? वायर सी आउट. एनी डाउट यहां तक? एनी डाउट? इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू. सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? इसके बाद में आप क्या करते हो? जैसे IC 741 अगर आपने लगाई और इसके जो इनपुट्स है ये आपने फंक्शन जनरेटर को लगाए, तो फंक्शन जनरेटर से आप क्या करते हो? वैल्यू चेंज करते हो. ओके, 1 किलोहर्ट्ज 1 वोल्ट, देन 2 किलोहर्ट्ज 3 किलोहर्ट्ज एंड सो ऑन. सो अभी आपको इनपुट की वैल्यू चेंज करना है. इनपुट कौन सा है मेरा? ए और बी. सो इसकी वैल्यू हम कैसे चेंज करेंगे? सो फॉर दैट वी यूज a sequential block because after certain duration the value should be changed. So that's why it is known as a sequential block. Also it is known as a procedural block. इसको हम क्या बोलते हैं? sequential block को हम क्या बोलते हैं? procedural block. So Verilog में दो टाइप के procedural block है. एक है always और दूसरा है initial. So always block used for your designing purpose. ऑलवेज ब्लॉक जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं? डिजाइन के लिए. और इनिशियल ब्लॉक हम यूज करते हैं वेरिफिकेशन या फिर टेस्ट बेंच के लिए. ओके, इट्स ऑफ योर टेस्ट बेंच. सो वी हैव टू यूज हियर इनिशियल, INITIAL, initial. If you are having multiple statements, then here you have to write with begin and end. Begin and end. Clear? So what here we are having? Begin and end for initial. So we are using initial block. So simple, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करना है. So A की वैल्यू कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0. Either you can write 0 like this or आप 1 tick B0. 1 का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स, B का मतलब होता है बेस, बाइनरी, B understand binary and 0 understand actual value. So either you can write 0 or you can write that 1 tick B0. Okay. So what my B is? First combination मेरा 1 tick B0. Okay. For your understanding, we just write that 0. So my A is 0 semicolon, B is 0. Okay. इसके बाद में हम वेट करेंगे. Let us assume that we are waiting for 100 nanosecond. Okay. Then we change my value. A की वैल्यू मैं करूंगा 0 वापस, B की वैल्यू करूंगा 1. We just wait for another 100 nanosecond. फिर से A की वैल्यू करूंगा मैं 1. थर्ड कॉम्बिनेशन, B की वैल्यू करूंगा मैं 0. ओके, B की वैल्यू मैं करूंगा 0. Then I am just waiting for another 100 nanoseconds. A की वैल्यू करूंगा मैं 1, B की वैल्यू करूंगा 1. Okay, I will wait for another 100 nanoseconds, and here I can write as $finish. $finish का मतलब होता है your simulation stops, your simulation end. Here we start with begin, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको end. We start the program with module, तो आखिरी में क्या रहेगा? End module. Very simple test bench, no problem. Any doubt? Okay, again I repeat,
Testbench is a program, is a model without port. So Testbench here we write without port. So model name, okay. Then here there is no list. Then what inside it? There is a register data type, a register A and B, wire sum cout, and we have to just mention here our component, pre-designed component, that is of your hop underscore adder. What their instance name is UUT, and what their port connection. So dot A in bracket A, comma dot B in bracket B, comma dot sum in bracket sum, and dot cout in bracket cout. Now there are the case. कौन कौन सी टेस्ट केसेस हो सकती है? A 0 हो सकता है, B 0, then 0 1, then 1 0, 1 1, and okay, that's enough. So initial, we start with initial. If you are having a multiple statements, right there begin and end. So initially my A is 0, B is 0. We are waiting for 100 nanosecond, hash 100. Then A is 0, B is 1. We are waiting for 100 nanoseconds. Then A is 1, B is 0. And the last one is A is 1, B is also 1. Clear? And then finish. Any doubt? Any doubt in Testbench? Is that clear? Okay. So shall we implement on Xilinx? Okay. So it will take that another 5 to 10 minutes. And maybe by tomorrow we will go for hands-on ADA playground. So let's go with this. Okay. So let's check here. So first of all, you should end your previous simulation. Okay. We just end it. Also, we end with our elaborated design. Clear? Okay. Now Testbench is also a program. Testbench is also a program. So you have to add source. आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? You have to add source. So add. When you do add source, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं. कौन कौन से ऑप्शन है? Add or create constraint, add or create design source, add or create simulation source. So just add or create simulation source, then do for next. Okay. Then create a file, और इस फाइल को हम नाम देंगे tb underscore hop underscore adder. Okay. Then finish. There is no ports. So just okay. Okay. So in simulation, you may find that there is a TB. Now, when you are going to simulate it, it should be set as stop. So set as stop TB. Okay. So bus as it is, whatever the program we have done, so same program यहाँ पे लिखना है. कैसे लिखेंगे? So just write here register A comma B. Okay. What is next? Wire, small lowercase alphabet. So wire, कौन कौन सा है मेरा wire? Sum, cout. Okay. Then what here? I want to add my design. So my design name should be same as already I have mentioned in the program. So hop underscore adder. Then in bracket, I want to do the connection. So dot A in bracket A. Then comma dot B in bracket B. Then dot sum in bracket sum, and then dot cout in bracket cout. Same program. Okay. End with semicolon. Hop adder is done. After that, I want to just write the test cases. So initial. Okay. Start with begin.
end with end, and in between them I have to write my test cases. So what my the first test case is a equals to 0, b equals to 0. Okay, then we are waiting for 100 nanosecond, then a equals to 0, b equals to 1. We are waiting for another 100 nanosecond. What is next is a equals to 1, b equals to 0. We are waiting for 100 nanoseconds. And the last option is, what is that? A equals to 1, b equals to 1, and then end. Correct. And here you can do that hash $100 finish. Sorry. Sorry. Clear? Any doubt? Very simple program. Nothing else. Just try to understand what we have done. Once it is done, you may find in simulation source there is a test bench half adder, and a half adder are different. But when we use this half adder inside in Testbench, so this file comes in tb underscore half adder. So let's check, save, and you can find the magic is here. Is it right? There is no half adder programs here. You can see it is inside in Testbench programs. Clear? Once it is done, what to do? Once it is done, just do for run simulation. Just do that run simulations, behavioral run simulations. Okay, there is error. Let me check what the error is here. Elaborate step failed with error. Please check TCL consoles. We are not going for elaborating. Why it is coming? I have to check whether error is coming here. Launch simulation failed due to earlier error. What the error here I am finding? That I am checking here. Okay, elaborate step failed in 1 second. Elaborate path is not exist. TV underscore half underscore add. Okay, it's correct now. Some see out. It is done. What the error here? I have to check it. Payload step failed. Please check your TCL output combination circuits.
Okay, it is related with elaborated design. It is not related with the syntax. So I will go to it. Okay, and I will just check it whether it is having error. Dot sum dot cout. Finish. Okay. Half underscore add-on is same name, correct? Half underscore add dot a dot b. Everything is correct. Let's check save. Module installation should have an instance. Oh. Sorry. Okay, here I am just missing one thing, that instance names UUT. Okay, that's why we are getting error. Thank you. So thanks for your patience. So run simulation. Okay, fine. It's okay. Everything is good. Add your programs. We have mentioned it, but unfortunately here I just forget. So that's why we are getting an error. So you can check it. The waveform is generated here, and you can find. Now it is aimed at. In previous case, that means without Testbench, then that means every time we have to run for 10 microseconds and so on. But here you are getting it directly, 4 values. 0 and 0 plus 0, sum is 0, cout is 0. 0 plus 1, sum is 1, cout is 0. Then 1 plus 0, sum is 1, cout is 0. And for 1 plus 1, sum is 0 and cout is 1. So everything is going correctly.